that continues to get broader. It's good to have you smiling, gentlemen, for a change. I want to get Akashdeep quickly before I get in Dr. Anand Ranganathan and Shekhar Iyer for their perspective onto this conversation. You know, Akashdeep, are you happy today with what the status of the Congress is? Because do you believe somewhere कि अच्छा है कांग्रेस गिरती रहे और उससे आम आदमी पार्टी ऊपर होती रहे? Why don't you give them some good advice? Look at what's been happening in the state of Himachal. You know, Deepti ji, today I'll rather speak upon the guarantees stated by our honorable Prime Minister. Modi की guarantee. Modi जी की सबसे बड़ी guarantee है विश्व गुरु बनाना भारत को. Let me bring some facts on the table. The per capita income of India with 2 children is 14,000 rupees per month as per National Statistical Office. A private school in any part of India for a toddler is admission fee is 75,000 rupees. It means that the common man with per capita income of 14,000 cannot send his children to a private school. Now coming back to the government school. The government school, 300 government school in Gujarat has been running in one room, all batches, all classes. So they cannot go to the government school. तो क्या करना है कि ना कि भारत को अनपढ़ रखना है, ठीक है ना, कुछ काम कर नहीं सकेंगे तो क्या करेंगे ना, दूसरों का काम रोकेंगे. There was a Farishte scheme of Delhi government which saved 2,300 people. They stopped it. The interesting factor is from this October to December, for 90 days to 2022, they stopped all the medicine in Mohalla clinics. So this is the Vikas model. This is the government model that has Bharatiya Janata Party. And I just want to ask Sanju ji, ऐसा क्यों करते हैं कि लोगों को मेडिसिन रोक लेते हैं? आपको प्रॉब्लम है ऑपोजिशन में मेडिसिन रोक लीजिए, कॉमन मैन का मेडिसिन रोक के आपको. आकाशदीप, आप भी ऐसा क्यों करते हैं कि कांग्रेस से भरूच की सीट ले लेते हैं? आप भी ऐसा क्यों करते हैं? कांग्रेस इज योर बेस्ट फ्रेंड, राइट? तो आप भरूच की सीट क्यों ले लेते हैं? एंड देखिए, व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट संजय झा विल आल्सो स्पीक अबाउट द गारंटीज ऑफ मोदी. Akashdeep is also speaking about the guarantees of Modi. But interestingly, Dr. Anand Ranganathan, no one knows about the guarantees of the opposition. What do they stand for? Good evening. First of all, Deepti, many congratulations. Thank you. Wishing you all the very best for the future. With the panelists that you have, I'm afraid your task is really cut out. But let me let me talk about just 3 issues that my good friends, fellow panelists who are in the below panel have talked about. Starting with Tariq Saab. Tariq Saab ने कहा कि अखिलेश ने कहा कि जब राम जी का बुलावा आएगा तो मैं जाऊंगा. फेयर इनफ, एब्सोल्युटली नो क्वाल्म्स विद दैट. बट ये बताना भूल गए कि 10 फरवरी को सारा यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली अयोध्या गया था. 430 लोग, उसमें से 120 लोग गायब थे जो नहीं गए थे. वो एसपी के एमएलसीज और एमएलएस थे. क्या सबने ये कहा कि मेरे को जब बुलावा आएगा वेट करूंगा? सो इट सस्पिशियसली सीम्स लाइक अ डिक्टेट. वो सब डरे हुए थे. 120 लोगों का ना जाना, सिर्फ एसपी के लोगों का ना जाना, इट टेल्स अ स्टोरी. सो आई लीव इट फॉर तारिक भाई टू एक्सप्लेन. नाउ कमिंग टू डॉक्टर मुनी, माय वेरी गुड फ्रेंड, ही राइटली टॉक्ड अबाउट कि मोदी ने आम आदमी की हालत पूरी देश में बड़ी बुरी करी हुई है. आई कंप्लीटली एग्री विद हिम, क्योंकि आम आदमी जहां पे जीती जागती मिसाल है वो है दिल्ली में, जहां एक आम आदमी के पास 45 करोड़ का घर है. और वो घर उसने कब बनाया? जब कोविड अपनी चरम पे था, जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, तब 1-1 करोड़ के कर्टन्स और वेस्टर्न कमोड खरीद के आम आदमी ने अपना घर बनाया. सो कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर मुनी कि आपने दिल्ली के आम आदमी को इतना बड़ा कर दिया कि 45 करोड़ के घर में रह रहा है आजकल वो आदमी. नाउ कमिंग टू माय गुड फ्रेंड डॉक्टर झा, you know, there is something called facts and there is something called, I don't even want to mention it. The fact of the matter is our inflation is not at its highest right now. It is in fact one of the lowest in the last decade or so. In 2013, when the nation was getting ready to go to an election, the inflation used to be 13-14%. Right now it is 5 to 6%. Unemployment is at its lowest at 3.2. The fact of the matter is today, as Sanju has just mentioned, the third quarter GDP is out 8.4%. Are people going to say these are all doctored figures?
let them say doctored, but tell me one thing: is the fact that 120 million toilets have been made, is that doctored? Is the fact that 110 million tap connections have been done in 10 years, is that doctored? Is the fact that 430 million mudra loans have been distributed, is that doctored? Is the fact that 260 million Ayushman health cards have been given, is that doctored? Is the fact that 40 million houses have been constructed where 110 million Indians are right now staying, is that doctored? हर चीज डॉक्टर्ड है, तो डॉक्टर मुनि से पूछो ना चक्कर क्या है?